he has not been provided with the information by the PIO. The commission opines that providing bank statements of individuals is trespassing to privacy, which is a fundamental right of the citizens of India, as well as is exempted from the disclosure as per the provisions of Article Section 8 G. Section 8 Clause G. Nevertheless, the PIO is ordered to provide the total amount of funds, oblique money deposited to, to various beneficiaries under this state scheme for which the appellant has applied for the information. तो चोपो आपको सेकेंड सीरियल नंबर सेकेंड में आपको टोटल अमाउंट जितना बेनिफिशियरीज के पास गया है, जितना पेमेंट किया है, वो अमाउंट को आपको पीआईओ को हम ऑर्डर करता है आपको वो अमाउंट को देने का। जी जी। और से थर्ड में थर्ड इंफॉर्मेशन को आपको मिला है, टोटल फंड्स अलॉटेड फॉर फेज 1 एंड फेज 2 को आपको दिया है। ओके, ये मिला है, ठीक है। अच्छा, 4 में डिटेल इंफॉर्मेशन ऑफ MOBCD एंड ये फंड्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल फार्मर पर हेक्टर ऑफ लैंड, ये मिला है आपको? ये नहीं मिला है सर। ये नहीं मिला है? ये नहीं मिला है सर। ओके, so the serial number 4 has not yet been provided by the PIO. तो अभी अभी आपका एपीआईओ से सुनते हैं, आप भी सुन लीजिएगा। The PIO represented by the APIO, SHRI VIJAY, who is also the ADO headquarters Namsai. Present. So, can you tell us why this information number 4 has not been yet provided to the applicant? So the information, the serial number of Yes. where the sort of information they have written like details information of MOBCD and year funds related to individual farmer. Yes. This is the serial number 4. Yes. But we did not provide. We actually in our reply we wrote that as is this contains sensitive information. They straight up asked for bank account statements. So that is specific. No. He has asked for the bank account statement in serial number 2, which I have also now told him that it cannot be provided. But you have to provide the total amount of funds which has been transferred to all the beneficiaries, the total amount, but not stating that this much of amount was provided to Mr. Dai's account number, this and that. You cannot show that. I am not ordering you to provide that, but you have to provide the total amount of money or funds that have been transferred to the farmers or the beneficiary. Regarding point number 4, Yes. detailed information of MOBCD funds allotted to individual farmer per hectare of land. So, the scheme is such that the fund comes in a package and not in a per hectare basis. Have you replied that? Yes, sir. We replied that. So have you given the total amount of the sum total amount of the project or Yes, sum total amount of the funds that were meant for all the?
for all the components. Yes. But in this case, we have also mentioned that the fund that is sanctioned from the department is not lent on per hectare basis, but as a package. Okay. That's why we were unable to provide and for fund allocated to individual farmer per hectare of land. Yes. And one more assumption is that regarding this information, we had the hearing at first earlier. And in there also the details of information so are not very specific. So for civilian authority, our directors has instructed him. Yes. This be specific and what are you exactly looking for? He said that it's here with me sir, what it is. He said that for phase one only I need. So they instructed the PIO from DAO outside you cooperate him uh, and provide him the information needed in person and first information. Show him all the registers and all that he needs. That has been done on 20th August. Okay. And in the same here, verdict for civilian authority has written that he has to apply, may resubmit RTI application specific to immobility phase one, if not satisfied. So, sir, I think this hearing he should not have come to the second step. Should not have as a rather should have filed another fresh article. Yes. So, आपका आपके पास में वो जो फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी डायरेक्टर एग्रीकल्चर का ऑर्डर होगा आपका पास में 23 जुलाई 24 का जी सर जी उसमें आपको ये लिखा है कि अ, आपने उसमें फेज वन का इंफॉर्मेशन को चाहिए बोल के जी सर तो आप उस फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटी के ऑर्डर के बाद में आपका फेज वन का इंफॉर्मेशन को मिला कि नहीं मिला है सर हम डिपार्टमेंट में ये हम लोग उनको बोले एग्जैक्ट रियलिटी नहीं दिखा पाए वो सिर्फ पेपर को नहीं दिया था बस तो ऑफिस में दिखाया आपको जी जी आपने डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट किया है जी तो आप डॉक्यूमेंट मांगा जाता है आपको पहले डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए और नहीं किया तो देना चाहिए था सर इंस्पेक्शन सर ये उसमें लिखा कि बस प्रोसिक्यूशन अथॉरिटी ने वही कहा कि आपको काइंडली जो आपका डिजिटल रिक्रूटर रजिस्टर्स ऑल है फिर बुक से आप उसको काइंडली शो कीजिए तो हम लोगों ने अकॉर्डिंगली उसको ये किया और एक पूरा दिन निकाला मतलब और शीट करके पूरा शो किया तो अभी आपका आपका जो अभी इंफॉर्मेशन जो आप कंप्लीट नहीं मिला है उसका इंफॉर्मेशन को आपको फेज वन का चाहिए अभी तो फेज वन का आपका अभी तक इंफॉर्मेशन आपको जो नहीं मिला है वो पर है पर हेक्टर में एक फार्मर को कितना पैसा देता है वो नहीं मिला आपको और आपको ये लोग पीआईओ ने रिप्लाई किया कि ये जो फंड है ये पर हेक्टर करके नहीं आता है एक टोटल बोलेगा तो एक होलिस्टिक अप्रोच में कंपोजिट फॉर्म में फुल्ली एक पैकेज आता है एक टोटल फंड आता है आउट ऑफ दैट वो लोग शायद हर एक बेनिफिशियरी को पीआईओ के लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करता होगा तो फंड जहां से आता है ऐसा एक फार्मर का पर हेक्टर करके इतना पैसा है करके नहीं आता है तो वो पीआईओ अभी बोल रहे हैं आप और आपको लिख के भी दिया बोला तो ये सब लोग और सब मानते हैं ना सर तो इनका इम्प्लीमेंटेशन काम नहीं हुआ है जी जी डिपार्टमेंट का सबसे सर वो बेनिफिट जैसा दवा का किया था सर लेकिन अब उसे रेटिंग दिए थे वो किया है 23 पेजेस का जी सर लेकिन हम लोग सिर्फ 18 पेज का फॉलो किया है 18 पेज का फॉलो किया है the CIO had asked
submit the fees through the challan for 23 pages, but the appellant has been provided only 18 pages of information. ओके, उसको हम लोग रिकॉर्ड में ले लिया है। तो अभी आपकी अभी आपका इंफॉर्मेशन कंप्लीट जो नहीं मिला है, उसमें सीरियल नंबर 2 में द टोटल अमाउंट वो चाहिए, एंड सीरियल नंबर 4 में इंफॉर्मेशन ऑफ फंड्स अलॉटेड टू इंडिविजुअल फार्मर पर हेक्टर ऑफ लैंड में जो आपको वो लोग इन इन रिटन लिख के दिया बोला है कि ऐसा नहीं आता है करके, पर हेक्टर पर इंडिविजुअल करके। जी जी। तो दैट मीन्स आपको तो सिर्फ सीरियल नंबर 2 का ही हाफ इंफॉर्मेशन अभी बचा हुआ है, बाकी तो आपको मिल गया है। यस सर। तो अभी हम लोग ये करेगा, विल ऑर्डर द पीआईओ टू गिव यू द इंफॉर्मेशन इन रिगार्ड टू योर फॉर्म में सीरियल नंबर 2 pertaining to the total amount of money or funds that was paid to the beneficiaries. सुना है आपने? हाँ, और आपको जब आप ये इंफॉर्मेशन को मिलेगा, तो आप हमको जल्दी बताना है कमीशन को, सो दैट नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग में आप भी कष्ट न करे, पीआईओ भी कष्ट न करे यहाँ आने का, विल डिस्पोज ऑफ द केस। तो 7 फरवरी, तो ऑन और बिफोर 27 फरवरी आप हम ये कमीशन को जानने दीजिए कि इस बीच में आपको इंफॉर्मेशन मिला कि नहीं मिला। सो बिफोर दैट आप हमें बताएंगे तो हम आपका कष्ट और पीआईओ को भी कष्ट नहीं देंगे, वी विल डिस्पोज ऑफ द केस नेक्स्ट हियरिंग में, इवन इफ यू डोंट टर्न अप। So the PIO is ordered to give him the information regarding serial number 2, but only pertaining to the total amount. Yeah, not the account statement. Not individual amount. Yeah, no. That is exempted. Cumulative amount. Yes, cumulative amount of the money which was debited to the beneficiary's account. Correct. Yes. So that much of information is yet to be provided to the appellant. So in the meantime, if you have provided the information to him before the next date of hearing, you don't need to come. You can come online that time on the next date of hearing. So we'll dispose of the case 27 February. On 27 February. Next case, 281, 2024 series. Mamu Sono. Ah. Mamu Sono. Sure. Mamu Sono versus PIO EEWRD Namsai. ऑनलाइन में नहीं है नमसाई का? नहीं है। Excellent result. PIO absent without bola-bola info. मामू सोनो अपने। तो ये आपको पीआईओ ने जब आप फर्स्ट व्हेन यू हैड फाइल्ड द एप्लीकेशन, तो
वो कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया था। नहीं सर, इसमें ऐसे है कि उस दिन ये दूसरा कमीशन का वहाँ पे था केस में, जी जी इस वक्त हम लोग डिस्कस जी किया अभी चीफ सर का वहाँ में भी चीज आप केस है जी चलिए। तो इसमें ऐसे था कि सर हम जो 2023 को एक फाइल किया था इसको, मैंने सिंगल जो एप्लीकेशन में 16 प्रोजेक्ट को एक साथ में डाला। जी तो उसका बाद में यहाँ से फिर जो रिव्यू बैक किया वहाँ पे जी हेयरिंग नहीं हुई। जी तो चीफ सर का वहाँ में हेयरिंग किया हम लोग। जी तो चीफ सर का वहाँ में हम डिस्कस किया कितना है, तो ये चीज़ से देखिए इसको स्पेसिफिक स्पेसिफिक तो है इसके, फिर भी उसको सेग्रीगेट मतलब सेपरेट जी करो ना, जी वन एप्लीकेशन जी वन प्रोजेक्ट ऐसे करके जी था। तब मैंने वहाँ में हमको इस केस को डिस्पोज किया था, चलो हम उसको अकॉर्डिंगली चीफ का सजेस्ट है। ओके तो हम जो केस को वहाँ डिस्पोज करके हम फिर 24 को हमने फ्रेश फाइल किया, जी उसको 16 एप्लीकेशन बना जी ये, क्योंकि इसको एक साथ था। जी तो उसको 16 एप्लीकेशन बना के दिए। तो उसके बाद फिर हम लोग उस दिन फिर गया चिप का वहाँ। तो चिप जो यहाँ में एक हम बोला चिप सर तो इसको फिर ये जो डिस्पोज वाला है ना देखा, इसको अभी आप ऑर्डर बनाओ कि पीआई को जल्दी फर्निश करो। फिर चिप सर जो इसमें फिर गया लिखा है इसका जो गया वाला जो उसको रिलेटेड लिखे रेफरेंस लिखे, वही सेम थोड़ा सा कहानी रिलेट करके लिख दिया। तो इसलिए हमें बोला नहीं, ऐसे नहीं करके चिप सर भी तो इसको डायरेक्ट पीआई को उल्टा इंडोर्स करना था कि इसको इतने मीटिंग इतना इतना दिन में देना दे बोल ना, ऐसे नहीं लिखा है वो कुछ। अगर हमको उसका ये जस्मिन को उधर को शांति नहीं है तो यहाँ में फाइल प्रूफ के ऐसे सब होके दिए हैं। तो इसीलिए यहाँ में ऑर्डर ये लास्ट में सब कुछ नहीं चिप सर का जो साइज है उसका एक पहले आपने देखा एक्चुअली इस बार नवंबर है क्या, सितंबर, सितंबर को है ना ये, 1 सितंबर। 8 सितंबर के बाद में है, यू हैव कम टू दिस कोर्ट। ये तो वो फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी का ऑर्डर के बाद में आपको पीआईओ एक फाइनेंशियल ईयर एक स्कीम का जो आप मांगा है, पीआईओ ने प्रोवाइड नहीं किया है। कुछ भी नहीं, इसलिए यहाँ में हम जो इसलिए उस दिन जो नेक्स्ट वाला है में वहाँ क्या प्रॉब्लम है किया जाए, क्योंकि ये जो अगर जैसे कि हम लोग जब एडवाइस जो पैसा था उसमें हम जैसे कॉमन स्कीम होते हैं वो चलो दिक्कत हो सकता है, ये तो एकदम स्पेसिफिक स्कीम है ना, Now एकदम प्रोजेक्ट this है। is only for construction of approach road from Tiang River Bridge Point to हाँ mini village under Teju WRD division हाँ, ना, ये एक ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक है। प्रोजेक्ट हाँ है, ठीक एकदम है। स्पेसिफिक करके तो सेपरेट करके एक आपको एक भी नहीं दिया है एक भी इंफॉर्मेशन। करने So the PI, the appellant states that he has asked information for as a single project, that is construction of approach road, Tiang River Bridge Point, Tiang River Bridge Point to mini village under Teju WRD division. This he has filed a fresh application to the PIO after a hearing was
First Appellate Authority on 19 September 30, 18 September 2024. Therefore, mentioned wherein the First Appellate Authority ordered the appellant to narrow down his application to a specific and particular information for the fact that the earlier information application, the earlier application of the appellant was too voluminous and vague, for he had for period from inception of the office till July 2024. Inception of the office of the PIO till July 2024, which in fact is ambiguous as well as will be too voluminous, which is exempted by the RTI Act under Section 7 Clause 9. Second, and then honoring the order of the First Appellate Authority FAR, the appellant has filed a fresh application to the PIO for which the First Appellate Authority FAR also had ordered the PIO to provide the appellant the informations that he has sought. PIO is sent without intimation. Therefore, the statements of the PIO could not be recorded, for which the Commission order send summon notice to the PIO to be present in the next date of hearing in person or through online mode, failing which necessary action will be initiated against him as per the provisions of RTI Act 2005. Second, the appellant to contact the PIO, ask for the informations
PIO to provide the information as sought by the applicant on or before the next date of hearing. Next date of hearing is announced in the court, and therefore no need of serving notice to the appellant. The PIO will serve with the summon notice. Disturb the commission order. The next date of hearing be fixed on 27 February 10:30 a.m. You can come. You can avail the online facilities also if you have the challenges or difficulties to come in person. You can avail now. So as we have to give him a chance to be heard fairly, we have fixed the next date of hearing for which you have been let known. So, but before that, you do contact the PIO at least once or twice. We'll also send the order of this court to the PIO to provide you the information. So the next date is on 27th of February. Next date is also your case. Also WRDR. The same orders will go. Yeah, the same orders will go. Scheme was specific. Yeah, but the schemes. Okay. But they are of different schemes. No, the names. Okay, the same orders will go. So I think it may be same and 278 also. लेकिन note करो कि case numbers provide मेरे को तो गलत हो जाए. Schemes different. और नेक्स्ट तारम केंजी Taram Kenji. वर्सेस IMC गोपुर ईटानगर PIO. नहीं आई है Taram Kenji. ऑनलाइन नहीं है ना The appellant is absent without intimating the commission the reasons for his absence. Make appear that the appellant is not serious in his appeal. The PIO absent without information to the commission on that line will go, and therefore proceedings of the hearing of appeal did not take place and fixed for another date. Commission ordered the PIO to be served with summon notice, failing to appear in person or through online mode, failing with necessary suitable action would be initiated against him.
as per the provisions of Article Act 2005. To provide the information to the appellant on or before the next date of hearing. To serve as summon notice to the appellant to appear in person or through online mode in the next date of hearing, failing which his appeal will be decided ex parte. The next date of hearing is fixed on 27th February, 10:30 a.m. So send note what we can. Ria Taram, Pengya Tahar, Executive Engineer PWD Sangram. संग्राम तो नहीं है कब आयो नहीं है उसमें आप फर्स्ट अथॉरिटी ने क्या बोला है सर उसमें ये जो ना वो मैंने तो मीटिंग का हिसाब से उसमें एक वन स्कीम वन फाइनेंशियल ईयर था ना जी उसमें मैंने वो जो रिजेक्ट कर दिया था ना यहाँ को यहाँ से मैंने ये जो यान पुरालिस ना है तो यहाँ से एक ये जो नेम ऑफ वर्क को सिलेक्ट करो बोलते हैं हम बोला है मैंने तो तुम ऐसा इसी उधर में आते कमिश्नर कोर्ट में फाइल करेगा बोलते इसलिए मैंने यहाँ में फाइल कर दिया आपका फॉर्म एक को देखते हाँ। हैं तो हम तो ये हियरिंग भी लेट होगा इसका था ना हियरिंग भी तो थोड़ा ये जल्दी हुआ है ये केस तो को भी तो हम एक बार बताया था ऑफिस में आके सारे ऐसे ऐसे था इसको भी हम देखते थे और यार जो इस आईडी क्लियर कट भी डब्ल्यू डी यार पूरा है तो आपको कुछ कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नहीं दिया सर कुछ भी रिप्लाई नहीं किया दिया यो मतलब लेकिन कोर्ट में हमें मिला था वो जो फर्स्ट एपिलेट का अथॉरिटी का ऑर्डर SIDF schemes का ना the PIO absent without informing intimation to the commission about his sent the appellant present. The appellant states that he has asked information for the SIDF schemes implemented under the office of the PIO come Executive Engineer PWD Sangram Division for the year 2023 to 2024. Further, the appellant states that no information has been provided by the PIO despite the order from the first deputed authority. That being the reason, and that being the reason for this instant appeal to this commission. The commission, while going through the forming
appellant orders number one, PIO to be, to be sent a summon notice to present in the next date of hearing, failing which needed action will be initiated against him as per the provisions of RTI Act 2005 to, to provide the information sought by the appellant on or before the next date of hearing, failing which necessary action be initiated against him as per the provisions of RTI Act 2005. The next date of hearing, notice be sent to the PIO to ensure the attendance in the next date of hearing. Next, the notice for the next date of hearing need not be sent to the appellant as he has been briefed in person in the court today. Commission ordered the next date of hearing on 27 February 2025, 10:30 AM. तो वो नहीं आया है तो हम लोग उसको तो एक बार तो चांस देना पड़ेगा. Let us see if he comes on the next date of hearing. तो आपको क्यों नहीं दिया और आपका इन सारा डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन में से वो पीआईओ ये ऐसा भी कुछ बोल भी सकता है कि ये चीज एग्जाम्प्टेड है या तो थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है. सो या तो आपको सब हाँ देने लायक है वो भी बोल सकता है. तो वी हैव टू हियर हिम. सो वी हैव फिक्स द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग ऑन 27 फरवरी 10:30 AM. तो उस बीच में उसका पहले आप थोड़ा कांटेक्ट कीजिएगा पीआईओ को क्योंकि आज हम ऑर्डर कर रहे हैं तो वो आपको इंफॉर्मेशन देना है करके. तो उनको बताइएगा कि कमीशन ने ऑर्डर किया है आपको कि ऑन और बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग आपको मुझे इंफॉर्मेशन देना है करके. आप तो आपका भी आपका ही मेन ड्यूटी बनता है कि उसको कांटेक्ट करें इंफॉर्मेशन के लिए. उस समय हम लोग सुनते हैं कौन कौन सा इंफॉर्मेशन आपको देना है, होल देना है, हाफ देना है, ना क्या देना है. उसका बिना तो वी कैन नॉट हियर नो. वो तो देन आप भी इन इन पर्सन अगर नहीं आ सकता है तो ऑनलाइन में भी आ सकता है. तो 27 फरवरी. चलो और तो कोई नहीं है ना हिमांशु ऑनलाइन. जी